This I was telling you, when the patient comes to your clinic with pain in the medial aspect of the knee joint, have in your mind this is age who's around say 50 plus. This has to be something like a early osteoarthritis, and patient says कि मैं घुटना जब बेंड करता हूँ और मैं जब सीधा करता हूँ तो मेरे को बहुत दर्द होता है. This has to be a degenerative meniscal tear because of early osteoarthritis. क्या करोगे इसके बाद? What you will do after seeing this patient? एक्सरे, एटलीस्ट डू एक्सरे. उधर ही आपका डायग्नोसिस एकदम फिनिश. उधर ही पता चल गया कि ये आपका घुटना थोड़ा सा घस रहा है और ये प्रॉब्लम है. नथिंग टू डू इट. When the patient comes to do an MRI, remember so many things are not seen in the X-ray, right? So meniscus, ligament, कितने बार क्या होता है घुटने में मार लगी, एक्सरे किया, नहीं डॉक्टर ने बोला नॉर्मल कुछ नहीं है. अरे भाई अभी तू आ रहा है, कभी मार कभी लगाता, 3 महीना हो गया, अभी भी दुख रहा है ना तेरे को घुटने में, एक्सरे नॉर्मल है. मीन्स व्हाट? We have missed the soft tissue injury. That could be a meniscal tear, could be a ACL, could be a PCL, could be so many other soft tissue injuries. If a high index of suspicion, patient is not settling 1 week, 2 week, 3 week, गड़बड़ है, आगे और अपने को इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है.